The spunk look, so This is spunk to you? but this is not ready actually. It doesn't matter. This is the start of a spunk to you. आपने कुछ research की इसके लिए? No. No research whatsoever. Don't you think that's a bit risky? No, I don't think so. I think ideas come from mind and not from... But for those जो internet use करना चाहते हैं, well, we have a big surprise for you. WGSN is a trend forecasting website. We cover everything. So we have WGSN laptops down there with everything. Just take out all the information and guys, best of luck. As a design student, it's very nice website. It's informative. You get ready references. It's a good international reference as well. Colors are there. You know what colors to use, and it's like a Bible in your hand. This is one of the best website in forecasting. They don't only have forecasting thing in the website, but also has a lot of images, graphics, and lot of moods and lot of latest trends which supports whatever you're going to design. ये बहुत cool designer look है. ये आप normally ऐसे हो कि आप designer बनने के लिए ऐसे आज ready होकर आए हो? नहीं, मैं नॉर्मली ऐसे ही हूँ। Glasses भी ऐसे ही पहनते हो? ये आपका spunk है? हाँ, ये मेरा स्पंक है। तो ये लिखने से यहाँ spunk हो जाता है? बोर्ड बनाएंगे ना भी तो वो इधर होता है ना. आपको मैं तब से यहाँ वहाँ भागते ही देख रही हूँ. आप काम कहाँ कर रहे हो? आप ना नीचे इंटरनेट जोन में हो, ना आप ऊपर यहाँ पे हो. आप किस कोने में बैठ के आप सोच रहे हो, मुझे बताओगे प्लीज़? ये क्यों कर रहे हो? मूड वोट ऐसा क्यों है? कुछ सोचा भी है? ऊपर जाते हो, नीचे आते हो कूद के, नेट पे गए, इंटरनेट पे गए, ऐसे किया. अब हम क्या कर रहे हैं? वो घास छील के तो नहीं आया ना. नेट में 3rd ईयर में 3 साल हमने पढ़ाई की, अब यहाँ पे आए तो ये क्यों किया, वो क्यों, जो करना है वो समझ में आ रहा है ना, कर रहे हैं ना. वाओ, गोविंद तो डर गया. आई थिंक सब थोड़े से टायर्ड हैं, इसलिए नो वन इज रियली गेटिंग द जोक, पर कुछ लोग फुल्ली एंजॉय कर रहे हैं. सवेरे आया, सवेरे आते ही शुरू के बस यहाँ करना है, वहाँ करना है, 75 बार आगे खड़े हो जाओ, पीछे खड़े हो जाओ. मैं लंबा हूँ तो हमेशा पीछे भेज देते हैं. मैं पता नहीं रिकॉर्डिंग होगी, मैं कभी आऊँगा भी कि नहीं. Sorry to say, but I really like her. She's really cute. I think she's quite capable of being a good model now. I think I'm the prettiest. I'm very confident. I don't care about others. नहीं, मेरे को डिज़ाइनिंग कॉलेज के लड़के ज़्यादा पसंद नहीं होते वैसे भी. मतलब थोड़ा डाउट्स होते हैं कहाँ पर हैं, बट ओके. ऊपर ऑल ऑफ अस लाइक रियली बिजी विद वर्क, सो मैं तो उठी नहीं चाहे से. Oh, thank God. Finally, some submissions are coming along. Well, I mean, 6 घंटे हो चुके हैं. अब तक तो काम फिनिश हो जाना चाहिए था ना? I still don't have my printouts. I'm having a fabulous time. You can see my board. I exactly have one thing. And the other thing which had to be done, which was paint, and it's dried out and it doesn't even look nice. So I have to remake that and I have to put this. Printouts aren't here and I've spent 6 hours doing nothing, if you see. So I'm just not having a good time, to be honest. और सगुन का देखो, वो तो बस सवेरे से आइए, स्टाइल मारे, काम कुछ करना नहीं है. बस काम ऐसा पूछो मत. Thank you. Please give it to me. Thank you, God. Thank you. This is not mine. This is not mine. I personally liked Alok's because it was very neat and very straightforward, and also Harsh's because it's a very different take on the theme. मुझे मेरा सबसे अलग लगा, मतलब शायद इतना अलग किसी का नहीं है. सबने मुझे लगा शायद जैसा मैंने किया है वो शायद कुछ अलग है. Shivan, there is a guy. I think he deserves the best. He has a lot of knowledge. He's a very interesting person. I think when you put like one beam of light, it'll have like a very sharp shadow, something very stark. हर्ष दी गाला का भी, मतलब जो उसने उसमें टेक्स्ट लिखा हो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया. और ऊपर से उसने सिर्फ अपना शायद स्पेस फिल करने के लिए उसने की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, तो शायद मैंने उसको बोला कि लिख के ज़ेरॉक्स निकाल के लगा दे. बट There is a girl, Shagun, very talkative, very bubbly, but at the same time, थोड़ी egoistic है. I think she should calm down a little bit. Guys, हमने कहा था ना, no ripping of magazines. Rape.
guy with the blue thing with definitely going back home. And yeah, there's another thing which had some figure with some checkered thing. You know, it's very confusing. You don't even know what the theme is. कल एलिमिनेशन राउंड है, थोड़ा बहुत डर लग रहा है. अगर मेरे हिसाब से देखा जाए, जो लोग कल के एलिमिनेशन में घर जाने चाहिए तो शायद ज्योति है शायद, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मूड बोर्ड के हिसाब से कुछ बनाया. उन्होंने एक आर्ट वर्क बनाया, अच्छा बनाया, लेकिन मुझे उतना अपीलिंग नहीं लगा. But I just hope that it's not me. Okay, guys and girls, this is where your first task will be judged. And as you all know, fashion industry बहुत ही ruthless होती है. जो आज इन होता है, कल आउट होता है. And I'm very sorry to say कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होने वाला है, because आप जानते हैं कि आज 3 contestants घर जाएंगे. और आज आपके extraordinary talent को जज करने के लिए हमारे पास एक extraordinary judge. And that, ladies and gentlemen, hold your hearts, is the highly acclaimed JJ Valaya. Do I need to introduce him? Critics इन्हें the high priest of high fashion बुलाते हैं. And ये, ladies and gentlemen, है इस competition के judge number 1. और आपको 4 वर्ड्स दिए गए थे, आपको उनमें से एक वर्ड चूज करना था और उसे इंटरप्रेट करके एक मूड बोर्ड बनाना था. Well, अब वक्त आ गया है to showcase your talent. Could we have the first contestant, please? Madhusudan. मैंने सोडा का थीम किया है. सोडा एक बॉटल देखने से हमें लगता है कि ये काफ़ी कूल है, एंड कूलनेस फॉर समर्स. So how would this move into winter? इन विंटर टाइड्स विल बी देयर. सी में टाइड्स आते हैं तो काफ़ी ऊपर नीचे होते हैं. This is Spunk. Spunk to me, it's someone who's gutsy. Spunk is unique. Spunk has adventure. It has determination. It has character. I think to succeed. You can relax. Just keep that down. Soda to me is not just a tangible thing, but it's a feeling. It's a feeling of freshness. It's a feeling of waking up. It's a feeling of change. It's a feeling of revolution. Top marks for presentation, of course. Again, so sodas and this. I want to revolutionize. I want to open up a mindset. Things are always like this. So if you look at it, a microphone is like a microphone. But how about changing it? ये आपकी सोडा बॉटल है क्या? Yeah. No, this is just a glass depicting a soda. It's not actually a glass, it's a cylinder soda. Welcome to the lounge. I've taken soda as my theme. Soda के elements होते हैं. It's transparent, it's fizzy, it's crispy. इन्हीं elements को ध्यान में रखते हुए, I had a garment in my mind. जो आपको करना था, was not thinking about a garment at all. Right. Was more thinking about what this word brings out. Right. But what happens is that मेरे को अपना mood board को with the garment ही relate करना है. So मैंने दोनों को future thought करके दोनों को सिंक पे लाने की कोशिश की है. I've represented starkness and I've depicted starkness in my painting. I think we totally show out our personality through our clothes. Let's be specific. We are about the Okay. flowery language. How will you use what you This is your image, and supposing you were to translate this into a garment. I'm going to make a lot of confusion happening on the top, a lot of flora and fauna which goes off to browns and blacks showing depth with a lot of white flowing down. This is my mood board. Before we start, you've got to explain this. I have a I have a brand with my friend Naresh. So this is the current collection inspiration for this. Out of the 4 keywords given, I picked up starkness. And for me, starkness is depicted by being on the edge. Geometry was something which I thought can represent starkness very well. I take inspiration from sensuality, a soft romantic celebration of womanhood. I see sensuality in translucency, that how it is not completely transparent and not purely opaque. Questions, if any? It's nice the way your mood board and what you're wearing is coordinated. Pretty nice there. Out here, sensuality to me is a chemistry. It's a chemistry between whatever 2 objects. It's very relative. It's comparative. And out here, I'm trying to show a chemistry between a male and a female. I think a woman is sensual because of the presence of a man. Here, I've taken a concept, and basically it represents starkness. कलर सोचते हैं तो हमारे दिमाग में फेस्टिविटी, ओकेजन और हमेशा जॉयफुल फीलिंग आती है. बट व्हेन वी थिंक अबाउट ब्लैक, it stands for dark. From a fashion perspective, how would you put it across? Maybe we can think of a silhouette which is very tough or hard. हमारे साथ हैं आलोक, जो मैं आपको बता दूं हमारे बहुत ही स्वीट सा बच्चा है यहाँ पे, बहुत जल्दी रो देता है.
तो आज नर्वस होके तो नहीं आए हो ना? नहीं, इंसान के दिमाग में बहुत सारे विचार, बहुत सारे सोच होते हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन उसमें भी कैसे वो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन में जाते हैं, एक स्प्लिट सेकंड में एक डिसीजन पे आते हैं, एक हार्ड डिसीजन लेते हैं कि मुझे यही चीज़ करना है, वो चीज़ डार्कनेस आ जाता है उसमें। मैं आपको हर्ष के बारे में बता दूं, ये बहुत ही हमारा फैशनेबल कंटेस्टेंट है यहाँ पे। If you look at this mood board, I'm inspired by soda and its fizz. Usually soda connected with celebration. I wanted to connect it with devil celebration. I'm still failing to see the soda side of it. ये मेरे लिए बाइबल कुरान की तरह है, ये मेरा गाइडलाइन है। जैसे कि प्लेन को जब लैंड करना होता है तो सिग्नल चाहिए, तो ये पूरा का पूरा सिग्नल है कि कलेक्शन कैसा होगा, लुक कैसा होगा, कलर पैलेट कैसा। ये आपने ही बनाया है कि मैंने ही बनाया है और प्रिंट आउट निकाला है? प्रिंट आउट भी लिया और मैंने भी बनाया है। This is the color palette which represents the spunk with the help of warm colors which anyways create a junoon in ourselves, and ये जो सारा पूरा बोर्ड है उसके बैकग्राउंड में मैंने जो spunk वर्ड है उसके synonyms जो है वो सारे मैंने लिखे हैं। Can I see this? Let's get it here. कृति कैसा फील कर रही हैं? Happy हूँ, अपना काम देख के खुश हूँ। Punk for me is somebody who is very smart, very edgy, is very spontaneous about herself. She is more like a spirited punk, something that I could relate to myself as well. Spirited punk, yeah, that's a good take. Sensuality for me is something which stands out and which has an impact, and that's what I've tried to portray here with just one element of zipper. The pink zipper, it like indicates the sensual element of a female, and these are all the male counterparts and all. Can you just get it white here? ones on the zipper. And there's another this lip shape. Rajita, an economics student. मेरी थीम है सोडा और मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी chaos theory से. There's a lot going on in a soda bottle. If I had to apply the theme on a garment, then it would be very vibrant and the pop art. I'm sorry, I really can't see the connect, and I'm trying very hard to understand. My theme is spunk. As you can see, why I chose. Why am I not surprised? Yeah. Spunk to me was something very quirky. It shows this form of energy. As you can see, it moves, has edgy and angular lines, which forms a very circular shape. I have no questions. Really? Is that at all? Well, thank you very much. और जब तक ये जजमेंट का इंतजार करते हैं, इनमें से किसी को भी नहीं पता that who's gonna have the last laugh today. अभी तो the anchor is about to come. आपको क्या लगा कि आप जीत गए? Firstly, I was really excited to see JJ Valaya come here because first task था, and then you see such an eminent personality come in here. हाँ, नहीं खुश नहीं, अभी थोड़ा सा तो लग रहा है नर्वस, पता नहीं क्या होगा, रिजल्ट रहना है आगे या फिर वापस जाना है। I think he liked my concept, so I'm not nervous actually. When you come on the battlefield, you want to win. So obviously I want to win.